A statement is placed on the table of the House. सर, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, मैं एक साधारण आदमी हूं और उसी निगाह से मैंने इस सवाल को देखा है और मैं आशा करता हूं मंत्री जी जो जवाब दिया है हिंदी प्लीज। सर, जो जवाब मंत्री जी ने दिया है वो प्रति व्यक्ति 25,000 रुपए लोन एक हिंदुस्तानी के ऊपर है। जो बोरोइंग हम करते हैं वो प्लान, नॉन प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए पैसा लिया गया लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुए और उसका इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है। तकरीबन 20 मिलियन रुपीज इंटरेस्ट के तौर पर सालाना देना पड़ता है, विच इज अबाउट 4% ऑफ जीडीपी एंड 40% ऑफ द रेवेन्यू रिसीव्ड। जो फिस्कल डेफिसिट है वो बराबर बढ़ता जा रहा है और आपने उसे कंट्रोल करने के लिए FRBM एक्ट 2003 बनाया जिसमें कहा गया कि फिस्कल डेफिसिट शुड बी 0.3% या इससे कम होना चाहिए और रेवेन्यू डिपॉजिट शुड बी 0.5% या इससे कम होना चाहिए। जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है वो 40 मिलियन रुपीज। सर, अगर ये बैकग्राउंड बस मेरा लास्ट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इज अबाउट 40 मिलियन रुपीज। मेरा सवाल मंत्री जी आपसे सीधा है कि इस ऋण को कम करने के लिए जो कदम आप उठाएंगे उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या उससे हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होंगे या जो डेवलपमेंट होना चाहिए क्या उसमें कमी आएगी या किस तरह से ये अर्थव्यवस्था सही होगी? Sir, if I may say with great respect, borrowing as such is not such a bad thing as you make out. Countries borrow, governments borrow, corporations borrow, individuals borrow. What is important is our, one, capacity to use the borrowed money effectively and wisely, and two, our capacity to service the debt. Now, India is not among the most indebted nations of the world. In fact, India's ranking has improved. We are not among the most indebted nations of the world. But as a government, over the last 15 years, we have agreed to follow a path of fiscal correction. And our goals have been set very clearly. By 2008-9, the fiscal deficit must be brought down to 3% and the revenue deficit must be wiped out. That is a goal which every government has accepted in the last 6 or 7 years. And we are marching towards that goal. As of now, I believe we are on track. And if, as Parliament, we continue to exercise supervision over government, which in turn is bound to observe fiscal prudence, we will reach that goal. Now, as far as the state governments are concerned, they are doing well. In fact, we must compliment the state governments for doing well. Sir, the revenue deficit and the fiscal deficit of the state governments combined touched a peak of 2.78% and 4.72% respectively in 1999-2000. In 2005-06, according to budget estimates, we are expected to decline to revenue deficit of only 0.7% and a fiscal deficit of only 3.07%. If the state governments also follow the path of fiscal correction, I think the debt burden of the country is sustainable. We have the capacity to service this debt, and I think our economy will continue to grow at a rapid pace. सर, मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री है। सर, जब हम कोई बैलेंस शीट देखते हैं तो ये देखते हैं कि उधार कितना है और वो कितनी जल्दी पूरा होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं मंत्री जी से, व्हाट इज द अलार्मिंग कट ऑफ पॉइंट व्हेन वी शुड स्टॉप बोरिंग?
there's no cause for alarm. We are nowhere near any alarming cut-off point to stop borrowing.